हेलो किड्स, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप लोग? ऑल सबका लंच हो गया है? गुड इवनिंग, वेलकम यू ऑल वंस अगेन. मेरी लास्ट क्लास हुई थी आप लोगों के साथ 12 बजे. सो आई वेलकम यू ऑल बैक वंस अगेन on this NEET session of biology on Doubtnut. मेरा नाम है अंकिता चक्रवर्ती and you people know me, and हम लोग पढ़ रहे हैं digestion and absorption. This is the 6th lecture of digestion and absorption. जैसे कि आपको पता है, I keep recapitulating myself just at the beginning of my lecture that there are 2 lectures I take on this segment, यानी कि NEET Bio Class 11th segment पे मेरे 2 lectures होते हैं मेरे दिन के, Monday to Saturday. One is at 12 p.m. and the other one is at 4 p.m. So all you need to do is quickly log in and don't miss any of my classes. Previous class इसी topic के ऊपर था, यानी कि lecture 5 was also on digestion and absorption. So I would request, if there's any kid who's joined me here for the first time and who hasn't seen my previous lectures, आप इस lecture के बाद मेरे previous lectures देख सकते हैं, so that in case आपको समझने में और आसानी हो कि कैसे we move toward the chapter. ठीक है. नाउ एज यू नो डाइजेशन अब्जॉर्प्शन कर रहे हैं हमने ऑलरेडी. बिफोर लास्ट लेक्चर में वी हैड बिगन विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जहाँ पे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट सलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है. एंड आई टोल्ड यू अबाउट टॉन्सिल्स. अभी हम थोड़ा सा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स देखेंगे. डाइजेशन ऑफ फूड भी हम लोग करेंगे धीरे धीरे. विल गो स्लोली स्टेप बाय स्टेप. सो टुडे आवर फोकस वुड बी गैस्ट्रिक एंड द इंटेस्टिनल ग्लैंड्स. नाउ this is my introduction. Kids who are in my class for the first time, this is my name, this is my educational qualification, my years of teaching, my experience, etc, etc. Now moving forward, so this is our index. What we are going to learn today is gastric and intestinal. Now, before we begin with our chapter and before we begin with our topic, I have a small announcement to make. That is on the inauguration of the VIP course of NEET 2022. I would like to request you all, whoever is watching me now, if you all have a tendency or if you all wish to be a part of Doubtnut and to register yourself for this VIP course on NEET 2022, where you will be trained really well in a very strategized manner, 960 hours of classes of structured course. There would be top teachers who would be mentoring you, who've produced ranks for several years. There would be test series where you would be able to analyze yourself and analyze your preparation in a better way. Also, there would be a live interaction with your faculties. You can ask doubts, etc, etc. And last but never the least, that you will be given guidance by one of our best faculties who've mentored several kids and who've produced several ranks all over the past years. Now, what you can say is, so this is a question out to you all. You will see a poll coming on your screen. You just have to answer that आप लोग interested हैं या नहीं हैं to join the NEET 2022 VIP course. अगर आप लोगों में से किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. This is 0124-715-8250. If any one of you is having any kind of doubts, any sort of doubts, you can call up at this number, ring us up, and we will be reverting you back. Now, before I guess quickly, आप लोग पहले बताओ how many of you are interested for this course. Then हम will quickly jump into our quiz. जैसा कि आपको पता है, I begin with the class with a quiz and then we move forward to the rest of the chapter. So quickly बताइए. ओके, आई थिंक वी कैन मूव टू द क्विज राइट नाउ. सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पहला क्वेश्चन क्या है? ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स विच वन फॉर्म्स रुगी इन द स्टमक एंड विलाई इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस. सो आपको बताना है इनमें से कौन सा लेयर विल फॉर्म द रुगी इन द स्टमक एंड विलाई इन द इंटेस्टाइन. जल्दी से बताओ, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा लेयर स्टमक में रुगी बनाएगा एंड विलाई इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस? क्विकली, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. जल्दी से आप लोग बताओ कि विलाई. Okay, next question. Correct arrangement of muscles from the outer to the inner in muscularis of the stomach in humans. ठीक है, आपको humans में पूछा गया है. क्या पूछा गया है यहाँ पे? कि correct arrangement of muscles from outer to inner in muscularis of stomach in humans. ठीक है, जल्दी से बताओ आंसर्स क्या है. क्या लगता है आपको, क्या होगा आंसर? Quickly. So you have been asked about humans. You have to quickly say what is the arrangement of muscles. Quickly. Okay. See. So जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं.
of the following layers which one forms rugi? So अगर आप लोगों को wall of alimentary canal याद है कैसा था, outer most layer, चलो मैं थोड़ा ड्रॉ करके बताती हूँ. हमने देखा था आउटर मोस्ट लेयर क्या था, सीरोसा. दिस हैड epithelium, along with it had what, epithelium के साथ साथ सीरोसा में था little areolar connective tissue. So उस epithelium was not the simple columnar epithelium जो कि पूरे digestive system में मिलता है. Instead it was NKSS, that is non-keratinized squamous stratified epithelium, right? So outermost को हम कहते हैं सीरोसा. फिर उसके अंदर आपको मिलेगा मस्क्यूलरिस जो कि ऐसे 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 है. बाहर इट इज सर्कुलर, सॉरी बाहर लॉन्गिट्यूडिनल, अंदर इट इज सर्कुलर ऐसे. सो दिस लेयर इज फर्दर द मस्क्यूलरिस. देन उसके बाद क्या है, सो देन मस्क्यूलरिस के बाद फॉलोड बाय यू विल हैव द सबम्यूकोजा विच इज द कनेक्टिव लेयर. कनेक्टिव टिश्यू है इसमें पूरा. And then inside is the mucosa, right? ये वाला है आपका mucosa. सो जैसा कि आपको पता है ये एक एलिमेंट्री कैनाल के वॉल का डायग्राम है. सो यू कैन वेरी वेल सी हियर दैट इट इज द इनरमोस्ट म्यूकोजा विच इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स. दीज फोल्ड्स चेंजेस एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल बिकॉज डिफरेंट पार्ट्स हैव डिफरेंट फंक्शंस. तो यही जो म्यूकोजा है इट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स एंड इट विल चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर बिकॉज दैट इज वाई ऐसा ही होता है और इसी वजह से हर एक पार्ट का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है. क्लियर है? सो इसका आंसर विल बी म्यूकोजा. क्या है आंसर? सो इट इज द इनरमोस्ट लेयर which is present which gets folded into different shape both in the stomach and the villi. So आंसर क्या है? आंसर इज सी, म्यूकोजा. क्लियर? इट इज द इनरमोस्ट लेयर. अब आगे बढ़ते हैं. करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ मसल्स फ्रॉम आउटर टू इनर इन मस्क्यूलरिस ऑफ स्टमक इन ह्यूमन इज. तो पहली बात तो स्टमक में एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ऑब्लिक मसल्स मिलता है जो कि है ऑब्लिक. तो बाहर हमेशा क्या रहेंगे? बाहर है लॉन्गिट्यूडिनल, उसके बाद है सर्कुलर and then it is oblique. अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो. आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि एनसीईआरटी के डायग्राम में भी ऐसा दिया हुआ है कि ऐसा यहाँ पे ऐसा पता नहीं क्यों है कि बाहर का लॉन्गिट्यूडिनल तो गोल गोल है और अंदर का सर्कुलर ऐसे लाइन लाइन है. ऐसा क्या है? शायद एनसीईआरटी के डायग्राम में कुछ गलती है. आप में से कितने बच्चों ने ये सोचा है? मुझे ये बताओ कि एनसीईआरटी के डायग्राम में कोई गलती है, क्योंकि बाहर एनसीईआरटी ने लॉन्गिट्यूडिनल को ऐसे गोल गोल दिया हुआ है, सर्कुलर को ऐसे ऐसे लाइन डॉटेड लाइंस दिया हुआ है. सो लेट्स get this concept very clear. So यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को बीच में से काट के हम लोग एक क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं. मेरी बात ध्यान से सुनो. ये अगर एलिमेंट्री कैनाल पूरा है तो ये जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं वो ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स है, बीच में से ऐसे काटा गया है, इसीलिए वो दिख रहे हैं ऐसे गोल गोल. ठीक है? और जो आपके सर्कुलर सेल्स है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो आपके सर्कुलर सेल्स हैं अगर ये ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल है तो सर्कुलर सेल्स ऐसे गोल गोल होंगे. ठीक है ना? तो उसको बीच में से ऐसे काटा गया है, इसीलिए वो एज अ लाइन अभी शो कर रहे हैं, बट वो बेसिकली एक्चुअली सर्कुलर सेल्स हैं. उनको बीच में से काटा गया है एलिमेंट्री कैनाल को टू शो द क्रॉस सेक्शन, तभी वो ऐसे लाइन 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 देख रहे हैं. तो एनसीईआरटी की डायग्राम बिल्कुल ही सही है इस केस में. तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि अगर मैं अरेंजमेंट दिखाऊं तो सबसे पहला बाहर फ्रॉम आउटर टू इनर, अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ आऊँ तो सबसे पहले आपको मिलेगा लॉन्गिट्यूडिनल, फिर आपको मिलेगा सर्कुलर, फिर आपको मिलेगी ऑब्लिक. सो करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ मसल्स फ्रॉम आउटर टू द इनर इन मस्क्यूलरिस ऑफ स्टमक इन ह्यूमंस इज लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर एंड देन यू हैव द ऑब्लिक वन. क्लियर है? सो इसका भी आंसर है सी. क्लियर? चलो अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट विथ आवर टॉपिक. देखो पहले मैंने शुरू किया है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. अब जस्ट पहले कि मैं यहाँ पे आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स शुरू करूँ, मैं इससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ. हम थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, हम थोड़ा लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जानते हैं. एक चीज़ तो पहली बात तुम लोग ये देखो कि ये जो स्ट्रक्चर है, सी हियर,
कभी आप लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन को ऐसे ड्रॉ नहीं किया है? किया है कभी ऐसे ड्रॉ लार्ज इंटेस्टाइन को? नहीं. So we always draw large intestine like this, don't we? Right? Now, what is the reason of drawing the large intestine like this instead of this? Now, क्या है, देखो ये वाला जो अभी मैंने आपको बताया, सी दीज लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, कितने सेल्स है? 3 सेल्स. ठीक है, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल लेयर्स है ये मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में एज अ बैंड्स रहते हैं. ऐसे ये ऐसे 3 बैंड्स में फोल्डेड है. मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सब लोग सुनो. ये लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है, ठीक है ना. एलिमेंट्री कैनाल का जो मस्क्यूलरिस है इसमें जो ये लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स हैं वो ऐसे एज अ ट्रायो की तरह इसमें ऐसे फोल्डेड रहते. दे आर फोल्डेड इन अ ट्रायो. सो बेसिकली ट्राई सेल्स एक बैंड की तरह फोल्डिंग रहते. सो दे आर फोल्डेड लाइक अ बैंड. ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स से, अगर ये वाले लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स ऐसे हैं, sorry there would be 3, so they are folded somehow like this. ठीक है, clear है. So basically they are folded somewhere. Which cells are folded? The outer longitudinal cells of the muscularis. So they are folded in a band like structure, three in a band like structure, and that is why the presence of these, so ये foldings के वजह से ये pouches बनते हैं. So basically इनको क्या कहते हैं? टीनिया कोलिया. टीनिया कोलाई. कोलिया मीन्स टीनिया कोलाई. कोलाई क्यों? क्योंकि कोलॉन है. कोलाई बिकॉज इट इज द कोलॉन. इसको हम कहते हैं टीनिया कोलाई. 3 लेयर्स ऑफ सेल्स ही हैं, उससे ज्यादा नहीं है. देखो, सी हियर, क्विकली सी हियर. देखो यहाँ पे 3 लेयर ऑफ सेल्स ही हैं ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर सेल्स. अब ये इन अ फॉर्म ऑफ बैंड ऐसे फोल्डेड रहेंगे, इन अ फॉर्म ऑफ बैंड. ये सिर्फ मैं बात कर रही हूँ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में. सो इन अ फॉर्म ऑफ बैंड दे विल बी फोल्डेड एंड इन स्ट्रक्चर ये विल प्रोड्यूस ऐसे पाउचेस, ऐसे पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द सरफेस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, सो ये जो बैंडिंग है, ये जो फोल्डिंग है, इसको कहते हैं टीनिया कोलाई. और इसकी वजह से ये जो पाउचेस बनते हैं, ये जो पाउचेस, इनको कहते हैं हॉस्ट्रा. ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो. ये जो फोल्डिंग्स है इन्हें कहते हैं टीनिया कोलाई, और ये जो पाउचेस हैं इन्हें कहते हैं हॉस्ट्रा. क्या कहते हैं? हॉस्ट्रा. क्लियर है? सो बेसिकली ये है स्ट्रक्चर आपके टीनिया कोलाई और हॉस्ट्रा का, विच इज अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. नाउ व्हाट डू वी हैव टू सी? ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे so you have to understand that ये basically हमारा जो stomach है और जो the mucosa है, the mucosa is folded into folds. ये हमने पहले भी देखा, it's thrown into folds, right? So what happens is when this mucosa is thrown into folds, it will form rugae in the stomach and it will form villi inside the small intestine. It will form villi inside the small intestine. Now what do we see here? See, so यहाँ पे ये हमने फोल्ड्स देख लिया. वी हैव सीन द टीनिया कोलाई एंड वी हैव सीन कि ये जो ऐसे पाउचेस हैं इन्हें कहते हैं हॉस्ट्रा. क्लियर है? अब ये हम लोग क्या देखेंगे? नाउ व्हाट विल हैपन दैट इन बिटवीन, कहाँ पे होगा? इन बिटवीन द लेयर ऑफ द मस्कुलरिस. तो बेसिकली हम लोग पेरिस्टॉल्सिस जब देखेंगे, व्हेन वी विल बी सीइंग पेरिस्टॉल्सिस व्हिच इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ द फूड. ठीक है, मूवमेंट ऑफ द फूड, उस पेरिस्टॉल्सिस की वजह से वो पेरिस्टॉल्सिस, वो मूवमेंट विल बी गार्डेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सम नर्व्स. ठीक है, विदाउट द नर्व्स वो मूवमेंट नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि आपको हमको भी पता है कि वो नर्व, वो पेरिस्टॉल्सिस का जो मूवमेंट, वो नर्व ही हमको इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि वो मूवमेंट हो सके. कहाँ पे होगी? वो होगा मस्कुलरिस एक्सटर्ना में. ये हम लोग, तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का टीनिया कोलाई और हॉस्ट्रा हमने देख लिया. ठीक है, स्ट्रक्चरल क्या बनता है यहाँ पे. अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे आके कि यहाँ पे हम लोग क्या देखें. सी, सो
जब ड्यूरिंग पेरिस्टोलिसिस क्या होगा ड्यूरिंग पेरिस्टोलिसिस? सो वी हियर व्हाट डू वी सी? सो ड्यूरिंग पेरिस्टोलिसिस व्हाट वी विल सी दैट एक नर्व है, यानी कि मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना के 3 लेयर्स हैं, और पहले हम लोग देख सकते हैं, पहले 2 ही लेयर्स हैं. एक है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, एक है आपके ऑब्लिक मसल्स, सॉरी सर्कुलर मसल्स. ठीक है, मूवमेंट इन मसल्स का ही है, क्लियर है, इन मसल्स का ही मूवमेंट है. अब इनके बीच में रहेगा एक नर्व जो इसको इंस्ट्रक्ट करेगा मूवमेंट के लिए. दिस नर्व विल इंस्ट्रक्ट द मूवमेंट ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स. कहाँ पे? मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना में, ताकि पेरिस्टोलिसिस हो, मस्क्यूलर मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस हो, ताकि फूड नीचे आ सके. ठीक है, इस नर्व का क्या नाम है? मायेंटेरिक नर्व, मायेंटेरिक प्लेक्सस. क्या कहा मैंने? मायेंटेरिक प्लेक्सस. तो इस नर्व का नाम होगा मायेंटेरिक प्लेक्सस. सिमिलरली जब हम लोग this myenteric plexus, so here similarly inside the inner layer, that is inside the lumen, यहाँ पे भी absorption is required, right? तो यहाँ पे food का absorption होगा. food का absorption भी lumen ऐसे नहीं करेगा अगर कोई nerve present ना हो. so इसमें क्या होगा? submucosa, ये जो आप देख सकते हो, this is the submucosa, exactly submucosa के बाहर, and just where the muscularis externa will end and submucosa will start, exactly at that border there will be a presence of a different nerve जिसका नाम है Meissner's nerve. ये Meissner's nerve क्या करे? These Meissner's nerve will facilitate the absorption of food in the lumen or from the mucosa in the lumen. So दूसरा है आपको मिलेगा, that is between the circular muscles and, so the दूसरा nerve you will get in between the circular muscles and submucosa. ठीक है, and the name of that nerve is the Meissner's nerve. ठीक है, so the name of that nerve क्या कहते हैं उसे? name of that nerve is called the Meissner's nerve. This will control absorption of food. क्लियर है? ये दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी DQ, ये भी DQ, डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है, that the Meissner's nerve and the myenteric nerve दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन है, starting from the tinea coli and hostra. Both of them they are found in the colon. So the tinea coli hostra which is found in the colon, and the Meissner's nerve and the myenteric nerves दोनों, both of them they are found in, one is present in the submucosa just outside and the other one is present where? So this is the circularis muscle, here the myenteric nerve, it is present in between the longitudinal and the circular muscles. Clear है? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर व्हाट डू वी सी दैट इन द स्टमक, सो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक एंड द पार्ट व्हिच इज एंटरिंग द स्टमक, दैट इज नोन एज द esophagus. सो esophagus drops food inside the stomach for digestion. Right? Now, esophagus के पास क्या है? Esophagus has goblet cells. और these cells produce mucus. ठीक है,
सो ईसोफेगस के पास क्या, ईसोफेगस के पास है गॉबलेट सेल्स जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करता है. सो देयरफॉर देयर विल बी नो, आई मीन बेसिकली friction when the food is coming down the wall of the esophagus towards the stomach. Otherwise, so these goblet cells will make it so slippery, and the goblet cell will lubricate the wall of the esophagus so well that there will be no scratching or there will be no friction of the food while it is coming down towards the stomach. Now one more thing, that is already the food which is inside the mouth, which has been masticated and it has been chewed well by the teeth, has now been converted into the food bolus. Why? Because there's already salivary amylase which has entered the food and it has started breaking down the starch. Now this food will slowly enter the stomach, and this food which has entered the stomach in a semi-solid form and has already become acidic is known as chyme. The food enters the stomach from the cardiac sphincter and so here after the food is entering the stomach, so here what will happen? So now it will become acidic and is known as chyme. Okay, so here it will become acidic. So the food which enters the stomach to the cardiac sphincter, so there is this sphincter, the cardiac sphincter, the gastroesophageal sphincter, the food will enter with the help of that and it becomes acidic as soon as it enters the stomach. As we know that the stomach consists of the gastric, of the oxyntic cells, and also the stomach consists of the chief cells, okay, or the peptic cells. Now this we will see one by one. First we just understood that the pH inside stomach is really less, which is 1.5 to spanning to 4. So this is the pH inside the stomach is extremely less, and once the food, the half digested acidic food enters the stomach, it is known as the chyme. Now apart from that, stomach has many, so as I told you that these the mucosa which is present inside the stomach has been thrown into many folds, which is called rugae. What is rugae? That the stomach layer has been, or the mucosa or the lumen has been thrown into so many folds that now it has been known as the rugae. Clear? Now the stomach consists of several glands, digestive glands. What would they be? So these digestive glands, the main function of these digestive glands is to secrete the chief cells or the peptic cells, and the HCl which is secreted by the stomach is also done by the oxyntic cells. So these oxyntic cells or the parietal cells will secrete the HCl and also the C or intrinsic C Castle intrinsic factor. Castle intrinsic factor. So I will write this down. Okay. Here only I am writing. तो मैंने क्या कहा? Stomach has gastric glands. ठीक है, अब क्या है? Secrete, so it has gastric glands, stomach has. Now, and what will happen? So stomach either secretes pepsinogen, okay, prorenin,
So, and gastric lipase. Clear hai? See, now this secrete pepsinogen, so they will basically have chief cells. ठीक है? So chief cells or the peptic cells, so this will be secreted by the chief cells the peptic cells. Okay, so pepsinogen is secreted by the chief cells. Now chief cells are the major cells majorly which will produce enzymes. So these are the chief cells and also peptic cells because they release pepsinogen, but pepsinogen is in the inactive form and it is activated in the presence of HCl on a very low pH. Prorenin also, from prorenin to renin, acts on milk protein casein. Okay, and so here when we talk about gastric lipase, only, so gastric, so basically here this will act on, this prorenin will act on milk protein which is casein, gets converted to renin during when the pH is acidic or in the acidic pH presence of HCl. Gastric lipase on the other hand will be able to work, it acts on fat in a very less percentage, so only able why? Because gastric lipase cannot work at such a low pH. And mostly gastric lipase works in the presence of bile. Okay, and we know that there is no bile in the stomach because the bile has already reached up to the small intestine, which is the duodenum. So one thing you have to keep in mind, that if the question is asked that does a few amount of fat is getting absorbed or getting digested in the stomach, answer would be yes, because not much, but still there is an explanation, or still there is a presence of gastric lipase inside the stomach. So yes, so there is a presence of the gastric lipase. Okay, so the presence of the gastric lipase itself, yes, this one. So basically the presence of gastric lipase, this will, though it's very less, the digestion of fats would be really less, but still it will try, and mostly it cannot work in the absence of lipase, so lipase is already absent in stomach. So that was all about the stomach glands, and that is the lipase one, and gastric lipase, prorenin, and secrete pepsinogen. Clear? So these are basically, and we've spoken about the chief cells, we've spoken about auxentic cells and the CASA intrinsic factor, and also we've spoken about, okay, now one more thing I have to tell you here itself. So here we, as I told you, that we have two types of cells, one is the chief cells and the peptic cells, and the other one is the auxentic cells producing HCl. So this is one, and the other one is auxentic cells which produces HCl. Okay, so this HCl can maintain all the temperature, this HCl can maintain all the pH, etc. Apart from this, this secretes a CASA intrinsic factor, this is involved in the absorption of B12. Okay,
So this will be involved, or C intrinsic factor is involved in the absorption of B12. So here, in case if the C intrinsic factor, the CASA intrinsic factor is somewhere absent, no matter whatever B12 we take from the diet, we will not be able to absorb B12. So this is very important. All the glands of gastric glands are here. You have presence of sheep cells, peptic cells, goblet cells. I told you goblet cells are those cells which will make the food slippery and will add mucus to the food while it is passing down the esophagus, so that it does not create ulcers. So we have the sheep cells, we have peptic cells, and we have also all these that is secrete. This is pepsinogen, prorenin, and gastric lipase, and along with that there are goblet cells which produces mucus, and also there are oxyntic cells which produces HCl, and also the intrinsic CASA intrinsic factor. Clear? This is gastric glands. This is clear. Okay, so now we have to see about the small intestine. So first of all, speaking on the small intestine, we have to remember this, that the small intestine, maybe it is small, but it is not actually small in the length. So the large centimeter is not a very long tube, but it is in case of the small intestine. The duodenum, jejunum and ileum being the largest, which is almost 25 feet. While that of the jejunum is just around 4 and 5 feet, and the duodenum is only 25 centimeter. So the small intestine is made up of duodenum, jejunum and ileum. Okay. So what is happening here is, we know that duodenum is the smallest, 25 centimeter, but max digestion takes place here. Done. Next is jejunum. This is 5 feet tall. Five feet length. And last is 25 feet. Okay. Now, after beyond this, that, so small intestine, if you know, as I told you, it's duodenum, jejunum and ileum. In duodenum, it is the smallest, only 25 centimeter, and maximum digestion will take place here. In case of jejunum, only reabsorption, this maximum reabsorption. And in ileum, what will happen? So ileum would be sorry, maximum absorption, not reabsorption. Okay, so ileum is 25 feet long. It is huge, and in ileum there will be very less, very minimal absorption. Clear? So this is about the small intestine, and we have jejunum, we have duodenum, jejunum and ileum. Now, apart, as I told you, we had discussed about the Peyer's patch and Pennant cells. Okay, so now talking about Peyer's patch, this is nothing but a mold associated secondary lymphoid tissue present in lamina propria of mucosa.
Okay, so this is the malt associated secondary lymphoid tissue which is present in the lamina propria of the mucosa. This is an aggregate of tonsil. Okay, so what is this? So this is also known as the aggregation of tonsils which are used to held up in the Peyer's patch. Okay, so Peyer's patch will actually, so those microorganisms or infecting substances which has reached all the way down to the small intestine by traveling all this way and they have yet been saved. So now it is the work of the Peyer's patch to catch and kill them. Clear? Apart from Peyer's patch, there is Penneth cells. So what are these Penneth cells? These cells are parts of crypts of Libercoon. And what do they do? Lysozyme activity to kill cells. Basically, so these are Penneth cells. So just remember, Peyer's patch and Penneth cells is what you have to remember. Okay, so Peyer's patch and Penneth cells. So Penneth cells is a part of the crypts of Libercoon and they also have lysozyme activity. Clear? And the Peyer's patch is the aggregation of tonsils and they used to kill all the microorganisms present there, and this malt associated and also a secondary lymphoid tissue. Clear? Now, so this is all about small intestine. We would be seeing the large intestine tomorrow, and also we will be starting with the digestion of food from tomorrow. We are done, almost done of giving you details. As I told you, I'm almost done with giving you details. From tomorrow, that is the next class, I will be beginning with the digestive glands. Clear है? तो अभी तक जो भी पढ़ा है आप लोगों को समझ में आया? ठीक है. सो कल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन ऑफ फूड. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तो हमने देखा है, थोड़ा थोड़ा हम लोग उसी के साथ भी करेंगे, अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, साथ साथ पढ़ेंगे. एंड मोस्टली वी वुड बी फोकसिंग ऑन डाइजेशन ऑफ फूड फ्रॉम टुमारो. ठीक है? क्लियर है? सबको समझ में आ गया? चलो, सो देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड डू रीड टुमारो. जैसे कि आपको पता है आपकी 2 क्लासेस रहती है, एक सुबह दोपहर को 12 बजे एंड दूसरा की शाम को 4 बजे. सो सी यू ऑल टुमारो वंस अगेन एट 12 PM. सो अब तक के लिए स्टूडेंट्स